And more updates pouring in, and this time Abhishek Banerjee is defending his party amid the chaos over the Lionel Messi event in Kolkata. He has gone on to cite past tragedies like the Kumbh Mela deaths and the New Delhi railway station stampede. He also pointed out that the Chief Minister has apologized within an hour of the Bengal incident and that the action is being taken against all those responsible. Let's take a look. का सरकार के राज में कुंभ में इतना लोग मारे गए, दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतने लोग मारे गए, आप लोग जाके सवाल करते हैं उनसे क्या? योगी आदित्यनाथ से सवाल किया? आप सुकांतो मजूमदार से सवाल किए हैं? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब स्टैम्पीड में इतने लोग मारे गए थे, आप लोग जाके बीजेपी का कोई भी नेता से मंत्री से सवाल पूछते हैं? मुख्य बंगाल में जो घटना हुआ उसके 1 घंटे के अंदर द चीफ मिनिस्टर हैज अपोलोजाइज्ड, जिसके ऊपर आरोप है उस पुलिस ऑफिसर से लेके स्टेडियम का जो मैनेजमेंट का टॉप पोजीशन में है उससे लेके मिनिस्टर से लेके सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी हारती है और इसलिए तृणमूल उनको हराती है। And Kamalika continues to be with us on the broadcast. Kamalika, what is this body language? On the one hand, an event that was meant to be taking place at the Mecca of Indian football, the Salt Lake Stadium in Kolkata, was met with so much of flack. It brought the nation national shame. We're talking about Messi returning to the country, and then this is what he saw. And on the other hand, you see the government in the state brazening it out, saying that the chief minister has apologized as if it was a favor. See, this is the broader optics of the politics that is going on with the entire Messi's mess. In one hand, the government yesterday, the Mamata Banerjee apologized. Yesterday, the DG, the sports minister resigned. The DG was show-caused, the CP was show-caused, and also the DC was suspended. But at the same time, that does not definitely justify what has happened there. So definitely in one way, the BJP is totally attacking the Trinamool Congress because something which has shamed the entire nation is something which the opposition will definitely coax on. On the other side, like Abhishek Banerjee has reacted, he has tried to turn it with the whatabouteries by putting the question that what happens when Kumbh Mela stampede takes place, what happens when this railway station stampede takes place. So this is basically the political questioning of the two parties, the ruling party and obviously the BJP, and the election is coming there round the corner. So definitely this is something which has embarrassed the nation. This is something which is which should not have happened, and there is no even the chief minister has apologized, but this is something which has brought shame in the nation. So that is something which is definitely a very big issue. No matter the DG is show-caused, the sports minister has resigned, all these things are there, but that does not justify the problem, the incident which took place there. At the same time, the Trinamool Congress is trying to project that, okay, fine, these are the things which has been done. They have played their role. The government has been, they have been so much strict that they have also show-caused the DG. But at the same time, they are questioning that when something happens in the BJP state, what questioning comes up. So definitely this is a tutu meme which will be going on, that's for sure. But definitely nothing can justify the incident that has happened. Absolutely, on that day. but Kamalika, he's shooting the messenger. He is shooting the messenger. messenger. He's essentially asking the media that why are you going on to ask us a question when the chief minister has already apologized. Clearly, a lot of flack will come his way and the Trinamool Congress's way over this stance. No, absolutely. This is an incident where everybody has raised question. No, and absolutely. Kamalika, I'm really sorry to interrupt you. We have Rahul Sinha joining us on the broadcast. I'll come back to you in just a bit, Kamalika. Mr. Sinha, you heard what Abhishek Banerjee has said. He said that why are you asking us questions? Why don't you go about asking a question to the BJP government where an incident like Kumbh happens, where a stampede happens at the Delhi railway station? Why that entire hate reserved for the Trinamool Congress? This is the approach so far that we've seen from the TMC. Your response, sir? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का एक पुराना आदत है, जब उनका कोई खराब काज होता है वो साथ साथ नजरिया दूसरा और भेजने का कोशिश करते हैं। मेसी ने आया 4 शहर में,
3 शहर में कुछ नहीं हुआ और नाक कट गया बंगाल का। ये चीज से नजर दूसरा और घुमाने के लिए पहले मुख्यमंत्री अपोलाइज किया, उसके बाद इन्होंने जो उद्योक्ता है उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद मंत्री अरूप विश्वास को रेजिग्नेशन कराया। इससे क्या होगा? एक तो मंत्री अरूप विश्वास को गिरफ्तार करना चाहिए, सुजीत घोष को गिरफ्तार करना चाहिए, जो तृणमूल का एमएलए ये ऑब्स्ट्रक्ट किया, जिनके लिए ये समस्या खारी हुआ, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और पानी का बोतल, खाना, ये सब जो घुस आया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जिन पुलिस अधिकारी ये सब देखते हुए चुपचाप सहन कर गया, उन पुलिस अधिकारी लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। और इन लोगों का संपत्ति बेच के जो क्षति हुआ उसका क्षतिपूर्ति होना चाहिए। और जनता ने जो पैसा दे के गया देखने के लिए, उनको जो आज कुछ नहीं मिला, उन लोगों को पैसा लौटाना इन लोगों का संपत्ति बेच के करना चाहिए। तब जाके हम देखेंगे जहां जो पश्चिम बंग सरकार कुछ काम किया। लेकिन सिर्फ अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इन लोगों का काम ही है चीज को दूसरा और घुमाओ, दूसरा और देखो। अरे दूसरा और देखे तो देखे, 4 जगह में मेसी आया और 4 शहर में, 3 शहर में इतना अच्छा भव्य स्वागत हुआ, जनता खुश और मेसी खुश, कार्यकर्ता खुश। और यही पर क्या हुआ? यही पर नक काट गया, मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पाया, ऐसा स्थिति हो गया। इसीलिए इससे नजरिया दूसरा और घुमाने का कोशिश मत करे। कम से कम जो हुआ वो और ना हो। एक बेसिक कांड से पश्चिम बंगाल का नाक सिर्फ भारत में नहीं काटा, पूरा विश्व में काटा। अर्जेंटीना का पेपर में, टीवी में भी ऐसा खबर हुआ, जो कलकत्ता में ऐसा घटना हुआ। तो बंगाल रहा कहाँ? किसी जगह में नहीं है। इतना बड़ा जी। बंगाल का सत्यानाश करने का जी, बाद Sinha ji, बात thank you को so इधर much उधर for making that point for our viewers. We are with that shifting our focus